मुहिब वतन मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत, बरतानिया के खूबसूरत शहर रग्बी के पहले पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी मेयर डॉक्टर जेम्स मसी शेरा की आखिरी रसूमात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ रग्बी के मुकामी तारीखी गिरजाघर में सरकारी सतह पर अदा कर दी गईं। इस दौरान रग्बी शहर को मखसूस वक्त के लिए अमूमी तौर पर बंद कर दिया गया था। डॉक्टर जेम्स शेरा 6 मार्च 1946 को पहलवानों के शहर गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुए, जबकि आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी 15 जनवरी 2024 को गुजरांवाला शहर में ही हुआ। आपको 9 फरवरी 2024 को रग्बी शहर के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सितारा पाकिस्तान डॉक्टर जेम्स शेरा को पाकिस्तान और बरतानिया के खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात सवार रखने, इंसानी हकूक़ के लिए मौसर आवाज़ उठाने और इंसानियत से मोहब्बत में सारी ज़िंदगी गुजारने के एजाज़ में खराज तहसीन पेश करने के लिए बरतानिया भर से नामवर सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ती बरादरी, माहिरीन कानून, पुलिस फोर्सेस और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए अलविदा किया। इस मौका पर सफ़ीर पाकिस्तान, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ऑफ बरतानिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल, मेयर ऑफ रग्बी कौंसलर मिसिज मैगी, रेवरेंड कैनन योआब खान, डिप्टी लेफ्टिनेंट ऑफ द काउंटी ऑफ वारकशायर डॉक्टर एरिक वुड OBE, साबिक बरतानवी पुलिस कमांडर मखदूम चिश्ती और दीगर ने खताबात करते हुए डॉक्टर जेम्स शेरा की सियासी, समाजी, कौमी व मिली खिदमात पर इन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत व मोहब्बत पेश किया। अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर जेम्स शेरा साहब का फ्यूनरल, डॉक्टर साहब बहुत दोस्त पाकिस्तान के और बहुत उनको पाकिस्तान ने सितारा है पाकिस्तान, हिलाल कायद आज़म सबसे नवाजा। उनका बड़ी काविशें पाकिस्तान के लिए और ब्रिटेन के लिए भी। वो पहले एशियन मेयर ऑफ रग्बी थे। हमारा बड़ा ताल्लुक़ उनके साथ, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, तो हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान। Mayor of Rugby, Maggie O'Rourke, and I'm just passing on my sincere condolences to the family of Dr James Shera, who was a very dear friend of mine. He will be so sadly missed in the town of Rugby, where he was a giant amongst political figures. जैसा कि हमने अंदर चर्च में सुना, ये सिर्फ हमारा लॉस नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि UK में उनका है, और हम तो उन्हें मिस करेंगे, लेकिन हज़ारों लोग और जिन्होंने हमें पिछले दिनों में फ़ोन किया। Ever and eternally grateful for everything he did. May God rest his soul. Today is a very sad day. We laid to rest our very dear friend, statesman, Mr. James Shera Saab. I think he's one of those people in life, like I said in my speech, he's irreplaceable, but he's left a good legacy, a good example for people like us and for people like us who come after us to be able to follow in his footsteps. My name is Azim James Shera. I'm the son of Dr James Masi Shera. My father, he was a lovely man, a great man to us as a family. He was kind, warm, generous. We'll miss him greatly. ज़िंदगी और मौत का सफ़र साथ साथ रहता है। रोज़ दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, इसी तरह लोगों की अमवात होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपने मरने के बाद एक ऐसा वैक्यूम छोड़ कर जाते हैं जिसे फिल करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है, और जेम्स शेरा साहब की वफ़ात यकीनन उनमें से है कि इस वैक्यूम को, इस खला को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने एक अजीम दोस्त खोया है, उनके ख़ानदान ने एक बुज़ुर्ग, एक ख़ानदान का फ़र्द खोया है, बहुत से लोगों ने एक दोस्त खोया है। बहुत दुख का दिन भी है, और एक मुझे याद करना है मेरे फ्रेंड जेम्स शेरा, जिसका मेरा साथ करीब 40 साल का साथ था। उनके साथ बहुत अच्छी समय गुजरा, और उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। Hello, I'm John Slinger, Labour's parliamentary candidate for the next general election here in Rugby. James was a dear friend of mine and a mentor as well to me. For me, there are three things that shine out when thinking about James, three attributes. The first one is service to others before self, to the community, to the country, and to the wider world. The second is bringing people together from different faiths, different communities, different ethnicities, focusing on what unites us rather than what divides us. And the third is James's belief in action
in taking action to try and build a fairer and more prosperous world. Dr James Shera MBE सतारे पाकिस्तान सतारे कायदे आज़म मैं उनको 40 साल से जानता हूँ। मेरे चचा मरहूम बशीर डार के साथ उन्होंने काम किया है कम्युनिटी का। यकीन करो कि ऐसा इंसान खिदमत करना उसका मज़हब था। वो दो क्रिश्चियन पाकिस्तानी लेकिन उसके सामने मज़हब एक ज़ाती चीज़ थी। उसने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को इतना दफ़ा किया है यूके में माइनॉरिटी के साथ जो भी पाकिस्तान में जब भी कुछ होता था। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। हमारी कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का, ब्रिटिश कम्युनिटी का वो बहुत बड़ा असासा थे और उनके रहलत कर जाने से हम उनके दुख में, उनकी फैमिली के दुख में बराबर के शरीक हैं। मेरा नाम एस्तर दास है और आज हम अंकल जेम्स शेरा के फ्यूनरल के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। मैं सिर्फ लोगों को यही बताना चाहती हूँ, जैसे मैं उनको जानती थी कि ही वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज आइडेंटिटी कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और हर जगह पर इसका प्रचार करते थे। और जहाँ भी उनको लगता था कि किसी कम्युनिटी को इंसाफ की और साथ खड़े होने की ज़रूरत है, वो उनके साथ होते थे। चाहे पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आया तब, चाहे यहाँ पर बड़ी मॉस्क बनवानी थी, तो वो हमेशा इंटरफेथ में पेश रहते थे। नाम मंजू श्रीवास्तव है एंड जेम्स शेरा के साथ मैंने लगभग करीब 20 साल तक काम किया। हम दोनों टीचर्स थे, वो हमारे मैनेजर थे। हमारी टीम थी इंटरकल्चरल करिकुलम सर्विस। सो हम लोग इंटरकल्चर इंट्रोड्यूस करते थे, कल्चरल थिंग्स, और बच्चों को जो इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज उनको पढ़ाते थे। और जेम्स वाज वंडरफुल बॉस थे। हम लोग उनके साथ इतना रिलैक्स रहते थे, कभी उन्होंने हम लोग पे प्रेशर नहीं डाला और we always felt very free to talk to him. My name is Christy Bond. I was an area team leader for ICSS in the northern area, and James Shera was my director. It's a very sad day for all of us to have to come to James's funeral service. We have lost a great man. James was a legend, a gentleman in every sense of the word. जेम्स शेरा साहब की जो काविशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं, और जो उन्होंने काम किए कम्युनिटी के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए, वो हमेशा याद रहेंगे। Hello, my name's Debbie Tedds. I'm the Chief Constable of Warwickshire Police. So my sincere condolences to James's family and the whole community and those individuals that would have come into contact with James, particularly within rugby. James is a particularly special man. The trustee and chair of the trustees of Equip, a local charity that we work with really closely in relation to community cohesion and inclusion. So thank you very much for the invite here today. Aftab Razak, the Chief Officer of Legal and Governance at Rugby Borough Council. So I met James back in 2018 when I joined the council. And I remember quite vividly meeting him in the council chamber and just how much of a glow he had about him, how supportive he was to me just at the outset. And throughout my time of knowing James, he's just been such an amazing man. James has done, I've worked with James, so I've known James for a very, very long time. James has done so much for the community. Words won't, describe it, how far he has gone to support the Hindu, the Muslim, the Sikh, the community language classes, the organizations, and, he is a legend for us. And what he's done for interrelation with Pakistan and India and UK and all that. So we've all worked under him, and we would pay our respect to him. I only can say he's a legend to me. He's best friend and best uncle to my children, and they love him so much. Hello, my name's Manny Ketley. I'm Chief Executive here at Rugby Borough Council. I've known James for nearly 20 years, and I genuinely feel there'll never be another man like him. Never known anybody with such humility and kindness, such a gentle and humble man. He'll be really missed. I know in the time that I've worked here at the council, he has been so supportive. His words of wisdom have always stood me in good stead, and for sure he will really, really be missed. I'm the past mayor of Rugby, and I'm also currently the Warwickshire County Council portfolio holder for education.
I've known or did know James for a very long time. In fact, when I first got elected in 2002, he was the first to come and welcome me into the council, and actually really was the supporting father, so to speak, because even though we're from opposite parties, he still welcomed me in and continued to support me and guide me throughout all my years while I was at Rugby Borough Council, not only within the council but also outside. And I know when James originally fell very poorly and was diagnosed with Parkinson's, we would talk quite a lot because Bal, my husband, his mum was also suffering from Parkinson at the same time. So it's not a very nice disease, but we have to work through it. And also medication and, you know, what we have today is a lot different than what it was 20 years ago. But just coming back to James as a person, he was full of humanity, he was kind, he looked after people, and that's why there's been so many people here today in memory of him. Bal Singh, you've just heard my wife speak about James. She used the word humanity, and James often used insaniyak as a word to personify James in one word. It is that humanity. He was such a kind soul. मेरा नाम बॉबी वारिस है जी, मैं आई एम द सन ऑफ मलिक वारिस बर्मिंघम से। जेम्स शेरा साहब की फैमिली और हमारी फैमिली के कुछ 40-45 साल से हमारा तल्लुक़ है। आज इट्स अ वेरी सैड डे कि जेम्स शेरा साहब हमसे जुदा हो गए, बट इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हर कदम पे पाकिस्तान का नाम लेते रहे। Dr. Peter J. David from London. Mr. Shera was a great friend of mine. I mourn his loss. He was a great Pakistani. He was a great British man. He was a great man for rugby. First mayor Pakistani, an example to all of us. May God bless his soul. मुकर्रीन का कहना था कि डॉक्टर जेम्स शेरा एक मुहिब्बे वतन, इंसान दोस्त और बाअसूल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने बरतानिया और पाकिस्तान की हमा वक्त नुमाइंदगी का हक अदा करते हुए एक यादगार ज़िंदगी गुजारी। इनकी बरतानिया और पाकिस्तान के लिए गैर मामूली सियासी, समाजी, कौमी व मिली खिदमात सरअंजाम देने पर हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। SM इरफान ताहिर, वर्ल्ड न्यूज़, रग्बी।